Namaskar and warm welcome from Exercise Team. मैं हूं देवम and today we're gonna start our next session of current affairs which is from October month. टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने। आज हम काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, सो डोंट मिस इट। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फ्रॉम जीएस सेक्शन 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया आर्मेनिया डिफेंस एक्सपोर्ट डील। ये डिफेंस के मायने से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। दूसरा जीएस सेक्शन 3 से इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक, 5G सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में 5G चालू हो चुका है, आपको पता भी है, कई लोग आप में से यूज भी कर रहे होंगे। उसके बारे में हम जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे अगेन फ्रॉम जीएस सेक्शन 3 बट फ्रॉम एनवायरमेंट, एफएसआई रिपोर्ट ऑन टाइगर सफारी प्रोजेक्ट इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर उसके बाद पे हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3 अगेन एनवायरमेंटल, Bannerman's Turaco is at the brink of extinction। अब ये क्या है? ये स्पीशीज है, ये जानवर है या ये बर्ड है? आप में से कुछ को पता है, जिनको नहीं पता हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल बता दूं ये एक बर्ड है। मूविंग ऑन, फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीएस सेक्शन 3 साइंस एंड टेक विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज। Svante Pabo receives Nobel Prize in Medicine। नाम याद रखिएगा, ओके। We'll discuss more about it when we'll come to that point. Then we'll read, then we will study from defense section, first indigenously developed LCH। Now what is LCH? Why it is important? मेरे हिसाब से अगर आप मेरे शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो विल गेट टू नो। मूविंग ऑन, द सेवेंथ वन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज। व्हाट इज? तो इट्स सार्थक। सार्थक है, नाम नहीं है, सार्थक न्यूज में है, काफी चर्चित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जरूर से इस वाले करंट को मिस मत कीजिएगा, इसके पीपीटीज को दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है, जब हम इसको पढ़ लें उसके बाद। एंड द लास्ट करंट अफेयर, द एट्थ करंट अफेयर्स विल बी फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, ऑप्टिमस टेस्लास ह्यूमनॉइड रोबोट। रोबोट मूवी देखी है आप लोगों ने? कैसे एआई से स्वयं ही वो खुद ऑपरेट करने लगता है खुद को। ये चलिए रोबोट मूवी छोड़िए बॉलीवुड की, अगर हॉलीवुड में आपने एवेंजर्स मूवी भी देखी हो तो उसमें एज ऑफ अल्ट्रॉन एक मूवी थी जिसमें अल्ट्रॉन एक एआई रहता है एंड खुद से वो चीजें करने लगता है। सम काइंड ऑफ दैट विल स्टडी इन दैट। So, without wasting any time, let's begin our session with the very first. But before starting, let me tell you, this is from October month. We are starting October month 2022. India-Armenia Defense Export Deal. ठीक है, ये important है, मेरी नजरों में important है। India signed an agreement with Armenia to export missiles, rockets and ammunitions. इंडिया ने क्या साइन किया? एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? कंट्री आर्मेनिया। इसको मैप करिए, जरा मैपिंग करिए इसकी। टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स, ठीक है, मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशन। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोगों को मिसाइल्स और रॉकेट एक ही लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट एज ऑलवेज। नाउ लेट्स नो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। सो इंडिया साइंड an order for arms export through a government to government route। See, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी इसके बीच में नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ही डील कर रही है दूसरी गवर्नमेंट की कंट्री से, मतलब सॉरी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, ओके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। थ्रू विच टू नेशंस inked contracts, ओके, inked contracts मतलब साइन किया हुआ है। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड used very much, okay। The export ordered includes 6 additional first ever export of indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher, anti-tank rockets and ammunition। देखिए ये जो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आपने अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में देखा होगा, एक ट्रक के पीछे कई पाइप्स जैसे लगे हुए हैं और उसमें से रॉकेट पे रॉकेट पे रॉकेट पे रॉकेट्स जा रहे हैं। वही है ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ओके, जो एकदम साथ में ही दिवाली में जो 12 एक साथ रॉकेट जलते हैं
तो फूटते हैं, हमको मजा आता है। वैसे ही ये बहुत बड़े स्तर पर है। खैर मैंने बहुत ही गंदा एग्जाम्पल लिया है प्लीज, बट समझने के लिए अच्छा है। मूविंग ऑन, इंडिया हैज साइंड दिस डील विद आर्मेनिया टू हेल्प देम टू डिपेंड ऑन द कंट्री अगेंस्ट देयर नेबरिंग कंट्री अजरबैजान। ये सब मैप जरूर कीजिएगा। मैपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ योर यूपीएससी। ओके, आपको दिमाग में छपा होना चाहिए वर्ल्ड मैप। कहाँ है आर्मेनिया, कहाँ है अजरबैजान, कहाँ है सूडान, कहाँ है सऊदी अरेबिया, कहाँ है ईरान, कहाँ है अफगानिस्तान, कहाँ है पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, ये सब लाइन से रटे होने चाहिए। इनको बिल्कुल अभी भले पॉज करके करिए याद, लेकिन अभी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल प्रोवाइड अ मेजर बूस्ट फॉर द इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री। ओके, डिफेंस इंडस्ट्री में एक मेजर बूस्ट होगा। ओके, सो मूविंग ऑन, Pinaka multi-barrel rocket launcher. Let's know about it more. Pinaka has been developed by the Defense Research and Development Organization (DRDO) and manufactured by indigenous private sector firms. Okay, इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा। मैन्युफैक्चर इसको प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक इसके बारे में बताया गया है, अलग से एक छोटा सा पॉइंट ऐड है ये। इसको इस करंट अफेयर के साथ मत मिक्स मैच कर दीजिएगा कि शुरुआत में तो सर आपने कहा था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आ गया। पिनाका मल्टी बैरल और भी कंपनीज बनाती हैं, गवर्नमेंट भी बनाती हैं, तो हम इस वक्त पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Okay, moving on. Its development was started by DRDO in the late 1980s as an alternative to the multi-barrel rocket launcher systems of Russian make called GRAD. Okay, remember this name, which are still used by some regiments. Okay, it was first used successfully in battlefield during the 1999 कारगिल वॉर। कहाँ यूज हुआ था सबसे पहले? 1999 कारगिल वॉर में। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टू स्टफ, गुड टू नो स्टफ। ओके, अगर आप ऐसी चीजों को डे टू डे लाइफ में याद रखेंगे तो ये भी एक अच्छी ही बात है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, this indigenously developed rocket launcher is capable of locating the enemy launchers and tracking the incoming artillery shells, mortar rounds and rockets. Okay, पढ़िए इसको फिर से। One Pinaka has 6 launchers, 6 loader trucks, 6 replenishment vehicles and 2 command post transporting vehicles and a vehicle to transport the meteorological radar to provide wind related data. ये है पूरा आपका पिनाका। ओके, मैंने जो आपको बताया पहले वो एक पार्ट है जो मेजर पार्ट है, बट इन ब्रीफ ये पॉइंट है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको समझिए, इसको रटिए, इस डेटा को अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर मेंस में क्वेश्चन आया रिलेटेड टू दिस, you will get extra 1 mark for writing this point, this particular point. I am assuring you. So remember this, लिख लीजिए भली। It is currently used by Indian Army, obviously, especially at international borders with Pakistan and China, क्योंकि ये दो ही हैं एनिमी हमारे। एनिमी डायरेक्टली मुझे ऐसे कोट नहीं करना चाहिए ऑन अ पब्लिक सोशल मीडिया, बट हाँ ये इस बॉर्डर्स पर हैं, ठीक है। Now, our second current affair of the day, 5G services in India. The Prime Minister of India has recently launched 5G services in India on the sidelines of inaugural ceremony of India Mobile Congress 2022. Okay, आपने न्यूज में जब 5G लॉन्च हुआ था तो काफी देखा होगा, हर न्यूज चैनल पे आ रहा था। Like our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji was driving a virtual car. He was sitting in Delhi and the car was operated in Germany. So that is the level of speed 5G will provide. ठीक है,
देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये करंट अफेयर का क्या है, मतलब इसका कुछ है इम्पोर्टेंट या नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस इन ऑफलाइन समवेयर, so they were asking me, the students were asking ki is this really important. So let me tell you, this is important, and when you will read this whole news, you will get to know why it is important. Okay, साइंस एंड टेक आपका एक बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है। ये 5G एक रिवॉल्यूशनरी चीज है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिसेंट एंड बहुत एडवांस, जो रिसेंट एडवांस जो कि स्टे करेगा मिनिमम 3-4 years minimum, okay, which will impact our economy, which will impact business deals, which will impact many things in India. So that's why whenever a current affair is very impactful in nature, that is really very important for your UPSC. So here are some key points to be remembered. It will be launched in phased manner. Okay, initially 13 cities across India. ये 13 cities आपके फर्स्ट फेज की हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, अगर याद रख सके इनमें से 4-5 भी करके याद रख ले तो इट इज सफिशिएंट। सो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर एंड गुरुग्राम। ओके, important metro cities like Chennai, Mumbai, Delhi and Kolkata will be first to receive 5G services. देखिए, इनको भी मिक्स मैच मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, बट डोंट मिक्स मैच द फर्स्ट फेज एंड फर्स्ट टू रिसीव, दोनों में फर्क है, ठीक है। फर्स्ट टू रिसीव में कौन कौन सी है, तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लेकिन फर्स्ट फेज में 13 सिटीज हैं इन टोटल। ओके, द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल रिसीव नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बाय दिसंबर 2023। काफी जगह पर तो आप अगर देखेंगे तो इट इज, मतलब दिसंबर तो उनने काफी एक मोटा मोटा एक टाइम पीरियड ले लिया, लेकिन काफी जगह 5G ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इन मार्च, ठीक है, ऑलरेडी many parts of countries are taking benefit of this 5G services. Okay, maybe where you are sitting, you are watching my video by 5G services, maybe. So it is like very fast, हमारी काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और काफी फास्ट डेवलपमेंट है। Moving on, what is 5G? Now this is a very interesting question. Okay, कि what is 5G? 5G है क्या? So 5G is the next generation of mobile broadband that will eventually replace or at least augment 4G LTE connection. अभी आपके फोन में ऐसे यहाँ पर लिखा आता होगा ना 4G LTE और यहाँ पर बैटरी वगैरह, ठीक है। बहुत ही गंदा मोबाइल बना है, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग। सो इट इज द लेटेस्ट iteration of cellular technology engineered to greatly increase the speed and responsiveness of wireless networks. Okay, it will enable a sharp increase in the amount of data transmitted over wireless systems due to more available bandwidth with advanced antenna technology. Read this whole again. Okay, and don't let me tell you something in the middle of the session. If you want this PPT, you will very soon get it on Telegram, or you will very soon get it on our upcoming website, which is going to launch very soon. Okay, so you will be getting this all PPTs, even which we have completed. Okay, you will also get that PPTs, you will also get this PPT for your revisions, because many of you were demanding for the PPTs because of बार बार videos नहीं देख सकते हैं, so because आपकी डिमांड थी, आप में से कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, so okay, आपने कहा और हमने किया, we will provide you this PPT for sure. Now moving on, what are the benefits of it?
with a maximum data speed of 20 GB per second or more than 100 Mbps per second, ensures high data rate, reliable communication, and low latency. Low latency matlab minimum delay in simple words. It will help connect billions of lot of devices, improve the quality of streaming, and improve the important services launched as telesurgery and autonomous cars. Okay, मतलब जो Tesla type की cars, for example. Okay, moving on, it will मतलब not only Tesla but navigation and आजकल जो काफी कार्स में काफी ट्रेंड में जो चीज है कि अपने आप लेन में आ जाएगी, अपने आप वो स्टीयरिंग मोड़ देगी, घुमा देगी, दैट थिंग. ओके, it will enable real time monitoring of disasters, improve precision agriculture, automate hazardous industrial operations like offshore and deep mining. Okay, these are its benefits. Read it again, listen it again. Okay, moving on. Unlike 4G, which requires large high power cell towers to radiate signals over longer distance, 5G wireless signals are transmitted through large numbers of small cell stations located in places like light poles or building roofs. मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट है, बेटर है, एंड स्पेस भी कम कंज्यूम करता है. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में अच्छे होते जा रहे हैं, हम चीज़ों में स्पेस कम करते जा रहे हैं. पहले हम बहुत शुरुआत में अगर आप गूगल करेंगे तो मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी कार्ड नहीं बोलूंगा, एक स्टोरेज डिवाइस 1 MB का एक आदमी के बराबर था. 1 MB, ठीक है. द फर्स्ट वन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मुझे भी धुंधला याद है, बट यस इट वॉज वेरी मिनिमम storage and very big amount of device, very big, it was like a whole human. ठीक है. सो और आज की डेट में एक छोटी सी चिप 500 या 500 GB 1 TB तक डेटा रख लेती है अपने पास. सो नाउ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, नाउ व्हाट इट इज, जहां पर मोदी जी गए थे. It is a major networking event in India's technology sector. The event acts as largest TMT forum in Asia. It is jointly organized by Indian Government, Telecom Department and Cellular Operators Association of India COAI. Okay, it was quite nice and simple, I guess. I hope you get to know some. Our next current affair, FSI report on tiger safari project in Corbett Tiger Reserve. Over 6,000 trees were illegally cut for proposed Pakro Tiger Safari project in Corbett Tiger Reserve CTR, according to a report of Forest Survey of India FSI. 6,000 trees were illegally cut. This is a big statement. Okay, let's get brief into it. So, let's know something about Corbett Tiger Reserve. So, Corbett Tiger Reserve is an ideal home for many majestic animals like Royal Bengal tiger, Asiatic elephant, reptiles, birds, and many other wild animals. It is located in National District of UK, not United Kingdom, Uttarakhand. The project Tiger was launched in 1973 in Corbett National Park, first national park of India, which is part of Corbett Tiger Reserve. बड़ा घुमा फिरा के बताया. Simply, it is located in Nainital district of Uttarakhand. The project Tiger was launched in 1973 in Corbett National Park,
first national park of India. Good to know stuff. Which is part of Corbett Tiger Reserve. Okay? It was established in 1936 as Haley National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is named after Jim Corbett, who played a key role in its establishment. Okay, इनका नाम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट. ओके, आपके WWE वाले रेसलर नहीं है. Moving on. It is famed for hosting the world's highest density of tiger population. It houses 230 tigers with 14 tigers per 100 square kilometer. The entire area of the reserve is mountainous, पहाड़ी इलाका है, and falls in the Shivalake and Outer Himalaya geological provinces. अगर इस पॉइंट को आप समझ के मैप में देख के जान पा रहे हैं कि ये एरिया कहाँ है, बहुत डेटा है इसमें, उत्तराखंड में है, यूके कहाँ है देखो. फिर इसमें क्या क्या बताया, माउंटेनियस एरिया है. वैसे तो पूरा उत्तराखंड में आपको अधिकांश माउंटेनियस एरिया है, लेकिन इसमें एक चीज और है, शिवालिक, आउटर हिमालय जियोलॉजिकल प्रोविंस. ये सब मार्क करो, अभी करो, राइट नाउ, डू इट. नेक्स्ट, रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलेन and कोसी are the major rivers flowing through the reserve. ओके, कौन कौन से हैं पढ़ो फिर से. Apart from tigers, Corbett also has leopards, other mammals such as jungle cats या फिर जंगली cats, barking deer, spotted deer, sambar deer, sloth, etc. यानी etc. are also found there or here. Okay. Moving on, our next current affair. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, बैनरमैन्स टुराको या टुराको बहुत तरीके से अलग अलग कहा जाता है, लेकिन ये एक बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही, मतलब कि गायब हो रही. गायब ऐसे नहीं हो रही, मिस्टर इंडिया नहीं बन रही है, इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है. ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, why it is important, you will again ask me. Let me tell you why it is important. Because ये जो बर्ड है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीशीज में से एक है थी, यानी इसका एक्सटेंट होना इज लाइक, देखिए कोई एनवायरनमेंट पे कोई ड्रास्टिक चेंज या कोई ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, बट व्हेन सम स्पीशीज देयर आर, देखिए वहां पर लिस्ट होती है. ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज आर इम्पोर्टेंट, रेड जोन में कौन सी, ऑरेंज जोन में कौन सी, ग्रीन जोन में, हर कलर के जोन के अकॉर्डिंग कौन एक्सटेंट पर है, किसकी पॉपुलेशन बिल्कुल गायब है या खत्म है. ग्रे में वो आते हैं, रेड में वो आते हैं जिनके एक्सटेंशन पर है. तो उस कैटेगरी के बेस में बैनरमैन्स टुराको इज इम्पोर्टेंट. ओके, आई होप मेरा समझाना आपको समझ आया होगा. मूविंग ऑन. नहीं, जो बोल रहे हैं नहीं आया तो फिर से सुन लो. Now, key points. What are the key points? The population of the bird species is deteriorating because of habitat loss and the ancient hunting tradition for obtaining this bird's feather. Okay, the destruction of forest is exacerbated by the untenable bee harvesting methods, slash and burn farming, excessive grazing of animals. The rapid destruction thus affect the survival of this bird's feed from a unique variety of wild fruits from a particular tree species. ये कुछ कारण है कि ये क्यों एक्सटेंट हो रही है. कोई भी डाउट हो, नहीं समझ आ रहा हो, you can ask me. You cannot ask me right now, you can comment down below, okay? Now, let us know more about it. Bannerman's Turaco. Bannerman's Turaco is a species of bird in the family of Musophagidae.
ओके, याद रह जाए ना ऐसे वर्ड्स आपको आपके एग्जाम में. आई एम टेलिंग यू, नो वन कुड स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन IAS. नो वन कुड स्टॉप यू, लेट मी टेल यू. बट ये अभी तो याद रख लेते, एग्जाम में याद आना इज इम्पोर्टेंट. It is known as Fan in Oku language, a native language in Cameroon. It is named in honor of British ornithologist David Armitage Bannerman. ओके, इनके नाम पर रखा गया है, इनको ऑनर देने के लिए, इनको इज्जत देने के लिए. दिस बर्ड हैज अ डीप कल्चरल वैल्यू फॉर द पीपल इन कैमरून ग्रास फील्ड. Its natural habitat is subtropical or tropical moist montane forest. Okay, read this also once again. I urge you, I request you to do so. It will be good for you. See, from beginning, I am telling you one thing. Only watching my videos, only watching once is not sufficient. Either you like or either you don't like. Okay, I have nothing to do it. ठीक है, मुझे एग्जाम में आपको समझ आया नहीं आया उससे नहीं मुझे कोई फायदा है. मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ. मैं आपको एक चीज कह दूं, आपके अच्छे के लिए ये वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखा करिए. मुझे आपके 2-3 बार देखने से कोई व्यूज नहीं मिल जाएंगे. आप जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं, जो भी देखते हैं, आप कम से कम इसको 3 से 4 बार देखिए. देखिए, कोई व्यू नहीं मिल रहा है मेरे को आपके 3-4 बार देखने से. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप सोचें तो, जो भी ऐसे जिनका थोड़ा सोच जा रही है उनके लिए, जो नहीं सोच रहे उनके लिए तो कोई बात नहीं. But revision is the key, consistency is the key for the success in UPSC. Remember my point. Okay? Moving on. Now, in ancient times, anyone capturing a lion or other ferocious animal and bringing them to the palace will be awarded with a red feather from this bird. कितनी बड़ी बात है. मतलब पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में, कोई भी व्यक्ति अगर लायन जैसे खूंखार व्यक्ति का शिकार करके लाता था तो इन प्लेस ऑफ अवार्ड, सोना चांदी, तो ना 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 ना, इस बर्ड का फेदर दिया जाता था. तो आप कितना दुर्लभ और कितना इम्पोर्टेंट और कितना एक अलग बर्ड इसको कंसिडर कर सकते हैं. In the present era, the red feathers are given in recognition of those making important contribution to development of society. Still, also not the red feather. Red feathers एक exactly bird का दिया जाता है still जिन्होंने डेवलपमेंट किया हो, जिनका योगदान हो सोसाइटी में, बेटरमेंट में. Its natural habitat is subtropical or tropical moist montane forest. This bird species is categorized as endangered in the International Union for Conservation of Natural Red List of Threatened Species. मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में लिस्ट के बारे में? When we are starting, there are like how they recognize, there are color wise. Grey color मतलब एक्सटेंट हो चुकी है, रेड कलर एक्स कगार पर है, ऑरेंज, येलो, एंड देयर आर मोर फर्दर. विल नो दिस मोर अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू आस्क मी, आई विल मेक इट अ शॉर्ट. इट्स लाइक एक शॉर्ट में सब आ जाएगा. ओके, सो आवर नेक्स्ट करंट अफेयर. स्वाते पाबो रिसीव्स नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. कौन है ये भाई साहब? इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है अक्टूबर 3 को 2022 में. क्या इन्होंने ऐसा करा? लेट्स नो, लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट एज ऑलवेज. सो लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट अगेन एंड की पॉइंट. सबसे पहले तो ही हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी फॉर द ईयर 2022 फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. ओके, इसमें इनको नोबेल प्राइज मिला है.
He also discovered that genes from the extinct hominins were transferred to Homo sapiens after they left Africa some 70,000 years ago. Homo sapiens यानी कौन? ठीक है, हम लोग. कब की बात हो रही है? 70 साल पहले, 70,000 years ago. His research has resulted in the rise of a new scientific discipline called paleogenomes, which is the study and analysis of the genus ancient or extinct organisms. Okay, moving on. Defense is also very important type of current affair. जब भी डिफेंस के अंदर से करंट अफेयर आते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. First indigenously developed LCH. Now what it is? और मैंने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट करा था, कहा था आपसे कि क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूं. जिन भी लोगों ने मेरे शुरुआत से वीडियोस देखे हैं उनको एक चीज पता होगी, मैं हमेशा एक टाइप करंट अफेयर्स पर हमेशा जोर देता हूं. बताइए क्या? फर्स्ट, जहां ये शब्द आ जाए इसको तो मिस करना ही नहीं. इनकी एक अलग ही लिस्ट बना लीजिए. जितने भी करंट अफेयर्स मैंने सेशंस लिए हैं उनमें जब जब फर्स्ट का यूज किया है उनका एक लिस्ट ही अलग बना लीजिए कि ये फर्स्ट सारे करंट अफेयर्स हैं. सो द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इन देखिए फॉर्मली ओके inducted the indigenously developed multi-role light combat helicopter LCH Prachand, which is suitable for operating in high altitude battlefields. आगे ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो. ओके, हाँ ये सूटेबल होगा ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड ऑल्सो. ओके, मतलब नॉर्मली तो ऑब्वियसली करेगा और हाई एल्टीट्यूड में भी करेगा. लेट्स नो मोर अबाउट इट. तो इट्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH is the first indigenous multi-role combat helicopter. क्या है? मल्टी रोल है. It was designed and developed by state-owned defense company Hindustan Aeronautics Limited (HAL). It has been designed as a twin-engine dedicated combat helicopter of 5.8-ton class, thus categorized as light. It is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters with a considerable load of weapons and fuel as well, meeting the specific requirements laid out by the Indian Armed Forces. Okay, moving on. Now, what are its features? So, it is equipped with numerous stealth feature, armed protection, night attack capability, and landing gear capable of survival. It has extended range and high altitude performance capability as well as round the clock all weather combat capability. It is capable of neutralizing adversary air defense, conducting counter-insurgency operations and combat search and rescue (CSAR) operations. What kind of operations? CSAR operations. What is CSAR? Combat Research and Rescue. नाम से पता चल रहा है कॉम्बैट रिसर्च. सॉरी, रिसर्च नहीं, सर्च. जल्दी जल्दी में रिसर्च निकल गया. आई एम सॉरी. कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, नाम से पता चल रहा है ये किस बारे में बात हो रही है. मूविंग ऑन. इट हैज अ configuration for the pilot and co-pilot. The co-pilot is also the weapon system operator in this helicopter. A pressurized cabin offers protection from nuclear, biological and chemical contingencies. देखिए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये
मेजर आपका पॉइंट हो सकता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हेलीकॉप्टर फर्स्ट, तो मैंने कहा था कि जहां जहां जाए, लेकिन दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट है क्यों ये इम्पोर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Now, it is useful for conducting high-altitude bunker bursting operations and counter-insurgency operations in jungle and urban terrains. It can also be used for countering slow-moving aircraft and remotely operated aircrafts. This helicopter can also provide assistance to ground forces during combat situations. Okay, this is very important. Okay, I am having a little vibe कि इसमें से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना है. तो फिर से देखो, फिर से सुनो क्या मैंने अभी तक कहा है. ओके, मूविंग ऑन. India's present combat helicopters. Now let's know, अगर ये नहीं होता या फिर जब तक ये नहीं आया है अभी तक क्या क्या हमारे पास किस प्रकार के हेलीकॉप्टर. तो इंडिया हैज बीन ऑपरेटिंग सब 3 टन कैटेगरी फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर्स चेतक एंड चीता made in India by Hall. These single engine machines are primarily used for utility helicopters. Indian forces also operate the Lancer and armed version of Cheetah. The Indian Air Force currently operates Russian origin MiG-17 and its variants. आप बहुत बार सुने होंगे इसका नाम. कहाँ सुने, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और अगर आपने नहीं सुना है गूगल करिए, इससे रिलेटेड न्यूज सर्च करिए, कहाँ सुना है आपने, मुझे जानना है. वेरी इंपॉर्टेंट. आई मस्ट टेल यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई नीड अ कॉमेंट डाउन बिलो वेयर यू हैव सीन दिस. मुझे पता चलेगा आपने यहाँ तक देखा है या नहीं. और अगर उसके बाद अगर मुझे आपके डाउट आए किसी के भी कि सर इसका क्या था ये वो, तो मैं पहले बोलूंगा कि पहले मुझे इसका आंसर दो, ये कहाँ देखा था. But they are to be phased out starting in 2028. Okay? But they are to be phased out starting in 2028. Moving on to our next current affair. सार्थक, ये क्या है? NIMHNS, निमहंस जिसको हम कह सकते हैं, and Help Age India are jointly implementing सार्थक to ensure mental well-being of elders. ठीक है, mental well-being of elders, ये है आपका सार्थक. So let's get brief into it. This is also important because of its unique name. मैंने शुरुआत में आपको सबसे पहले करंट अफेयर में कहा था, जहां यूनिक नेम्स का भी यूज हो ऐसे करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू. Moving on. Now let's know about Sarthak. He's not a boy. Okay. The National Institute of Mental Health and even not a girl. Even no human. Sorry, jokes apart. The National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHNS, and an NGO named Help Age India are collaborating to implement Sarthak. It is a community-based initiative that provides nurses, healthcare workers, and volunteers training on geriatric mental health. ये क्या है मुझे जरूर बताओ, मुझे नहीं पता क्या. Now I am telling you, you will teach me. ये क्या है? जब तक खुद आप कोशिश नहीं करेंगे, खुद क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक मैं भी नहीं बताने वाला हूँ. I know very well, but you teach me. Under Sarthak initiative, 10,000 mental health workers will be trained to identify and counter mental health issue faced by older people. बुढ़ापे में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड तो होती हैं, बट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी होती हैं.
they may be suffering from kind of a mental health like घबराहट होती है किसी चीज को सोच के, किसी पास्ट को देख के, and they may be in a depression kind of a thing and people ignore it. Even not only elders, I must say, mental health is a very serious issue which should be raised in India. Indian people or the people of India are very ignorant towards this issue. I think personally this is a big issue which should be concerned and taken up. So coming back to our topic, let's not uh, divert. I'm sorry. कभी कभार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ. Sorry for that. Moving on. The training will be provided for non-specialized health workers and community caregivers through customized online modules focusing on specific categories like non-specialist health workforce, informal caregivers, and institutional caregivers. Now, NIMHANS Institute of National Importance 2002, the Bangalore based National Institute of Medicine, Health and Neurosciences is India's apex center for mental health and neuroscience education. It comes under the aegis of the Union Health Ministry and operates autonomously as the Institute of National Importance. समझ आ रही है? नहीं आ रही है? फिर से सुनो, फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर भी समस्या आया तो पूछो. मैं यही हूं, मैं दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा. Ask me. Moving on, and this is very interesting current affair. एंड में आपके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग करंट अफेयर रखा है. ऑप्टिमस टेस्लाइज ह्यूमनॉइड रोबोट. आप में से कितने लोगों ने एवेंजर्स अल्ट्रॉन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी है? देखिए ना, तो बस ये करंट अफेयर एज ऑफ अल्ट्रॉन है. ठीक है, ऐसा समझ के पढ़ी. और अगर नहीं देखिए तो देखना आज रात में. ठीक है, वैसे तो मैं सजेस्ट कम करता हूँ, बहुत पास में आपकी प्रीलिम्स, बट just you can take a bit time for yourself if you are studying. You can watch that movie. Optimus robots prototype unveiled by Elon Musk, CEO of Tesla. Okay, क्या है? Let's know about it. Let's get brief into it about the robot. तो a humanoid robot, नाम से पता चल रहा है, humanoid robot developed by American company based in Texas. Purpose it's to replace a human task with a machine. The humanoid robot demonstrated ability to perform simple tasks like watering plants, carrying boxes, lifting metal bars, and etc. This design of robot mimics the human anatomy with 5 independently moving fingers capable of grasping adaptively with high pressures. This enables it to use tools in an accurate manner like a human itself. हमारी 5 उंगलियां, पांचों का अलग अलग काम रहता है. आप बोले क्यों अलग अलग रहती हैं? मुझसे कई बार नहीं, एक आधी बार किसी ने सवाल पूछा था. लेट मी टेल यू अ स्टोरी कि ये 5 उंगली हैं, इनमें से ये आखिरी उंगली का कोई काम नहीं. आई थिंक इट्स यूजलेस, ऐसा किसी ने कहा था. मैंने बोला काट दें. कैन वी कट इट? यू विल बी फाइन विद दैट. He said, no, it's my part, it's my body part. Let me tell you, these fingers, these hands, even the fingers of your legs are balancing part of your body as well. They have many other things also. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं यूजफुल है ना. तो इसी तरीके से रोबो में 5 उंगलियां, सेम एज ह्यूमंस, all 5 are working independently, individually also. Okay, that's why it is notable thing. Now speciality, अभी तक हमने देखा वो स्पेशलिटी में ही काउंटेबल था, लेकिन और स्पेशलिटी सुन लेते हैं. This robot shares some of the artificial intelligence AI
software and sensors, the Tesla cars autopilot driver assistant features as well. अब अभी तक तो टेस्ला गाड़ी जो है वो खुद चलती थी, अब टेस्ला वाले ना क्या करेंगे, थोड़े दिन में रोबोट भी डाल देंगे उसके अंदर कि अब रोबोट चलाएगा आपके लिए फ्री में. Just kidding. Moving on, it has a uniquely designed octators, a complex set of gears, motors, sensors, and controls that act like a human muscles. कितनी interesting development है. Powered by AI software, it has high cognitive ability of perceiving, planning, and navigating the world. This is significant since other humanoid robots do not have this capacity. Okay, that's why it is important. Moving on, it is using same AI technology behind Tesla's FSD technology, a driver assistance software requiring comparatively less driver input to guide the robot. It will be trained by a custom data center technology called Dojo. Called Dojo. Dojo. Which is under development by Tesla. Dojo is a supercomputer that provides video training using video data obtained from Tesla vehicles. समझे? एज ऑफ अल्ट्रॉन देखना नहीं समझ आया तो समझ आ जाएगा. नॉट एग्जैक्टली दैट, मैं वो नहीं बोल रहा कि सेम वही है, वो तो अपने काबू में ही नहीं रहता है वो, बट दिस इज इन आवर कंट्रोल. सो दिस वाज आवर टुडेज करंट अफेयर. I hope you liked it. I know it's bit lengthy, but क्या करूं, important current affairs थे तो लाने पड़े. It is important. I will request you to watch this video and completely again. हाँ, आप थोड़ा थोड़ा skip कर करके देखेंगे for revision purpose. देखिए, आप जब पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं, रिविजन थोड़ा फास्ट होता है, सेकेंड रिविजन करते हैं और फास्ट होता है, थर्ड रिविजन करते हैं और फास्ट होता है. Like same, watch this video again. If you have any kind of a doubt, ask me in comment section, or you can directly ask us on WhatsApp, Telegram और Instagram. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने नंबर्स हैं. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स. सी द रेस्ट ऑफ द वीडियोस. सर के द्वारा ज्योग्राफी का ड्रेनेज वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको जरूर देखिए टू नो मोर अबाउट ड्रेनेज. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो.